Hey sassy lady, this is Matri, एक social media marketer, एक mother and a simple yet sassy woman just like you. ये है Little Fixes podcast, आपकी evergreen audio lifestyle magazine. यहाँ मैं और मेरे guest शेयर करते हैं sweet, simple and practical ideas to help you in improving every aspect of your life. Career, fitness, mental health and personal growth are just some of the topics we cover. This podcast is like the real talk you have with your real friends. So continue what you're doing and keep listening. Hello Sassy Nari. Thank you for joining me today. Today's episode is about mental health and also about entrepreneurship. मेरे साथ है Kashish Agrawal. Kashish is a self-taught mental health supporter. She is a freelance content writer and also a published author. Her poetry book, A Walk Into My Shell, is available on Amazon. Kashish had her own share of struggles with anxiety, and with her experience and journey, she talks about mental health through her initiative, Anxiously Yours. She has also launched her own line of self-care products, which includes guided journals and scented candles. Did I tell you that she is just 25? In this episode, Kashish will share her story, why she started Anxiously Yours, how her platform helps people, and why it is essential to keep talking about mental health. We'll also talk about starting and growing a small business, so stay with us. Also, fun fact, Kashish की sister एक time पे एक creative agency में मेरी colleague थी, and I discovered about Kashish work through her. तो social media की जय हो. Now let's welcome Kashish. Hi Kashish, I'm thrilled to have you on Little Fixes. Hi, Maitri. Thank you so much for inviting me on your podcast. It's totally a pleasure to get this opportunity to speak about my journey with you. Yes. So Kashish, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे beginning से, आपकी journey से. Tell us a little about your life before the pandemic. Yeah. So I've been born and raised in Jaipur, and if we talk about like my life before the pandemic, so in 2019 I went to Glasgow for my master's degree in marketing, and it was a one-year course. I was studying at the University of Strathclyde. After that, like I was there, and it was first time जब मैं खुद के शहर से बाहर निकली थी, not just शहर actually, India के बाहर गई थी, and it was a totally different experience. I was living on my own. I used to cook all the time. I was living on my own, and I made some international friends. So it was a totally different experience. And then right before the lockdown in 2020 March, I had to come back to Jaipur because of the pandemic, and then my course went online. So all my submissions, सारे मेरे sessions, सारे lectures, सब कुछ online चला गया था. So of course it was a totally drastic change. So that was my life right before the pandemic. Mm-hmm. Okay. When was the first time you experienced physical symptoms of anxiety? आपको कब लगा कि हाँ सब कुछ ठीक नहीं है? If we go back to मतलब discussing my journey with like anxiety, I was just 14 when I got my first anxiety attack. So उस टाइम पे मैं at that exact moment I was in school और मेरा just physics का exam होने वाला था, and I remember I could not breathe properly. Like मेरी it was like choking sensation हो रही थी, and then like I was sitting in my classroom. So I informed my friend that I'm not able to breathe. So she took me to the medical room, and then my father came to pick me up and he took me to the hospital. For the longest time, मेरी family में किसी को भी समझ नहीं आ रहा था that I am going through anxiety, because of course like this is what 10 years back, and as a 14-year-old you are not taught these things. आपको ये सब पता ही नहीं होता. Like इवन टुडे हमारे एजुकेशन सिस्टम का, हमारे करिकुलम का मेंटल हेल्थ पार्ट ही नहीं है. Like 12 years of school and there was no discussion on mental health. Yeah. So of course it was pretty difficult, and even during that time I went through some physical tests, full body scan and everything, and मेरी सारी reports clear आई थी. Especially during exam time मुझे काफी anxiety रहती थी. मुझे नींद आना बंद हो जाती थी. I used to wake up in the middle of the night, and I was just not able to breathe. So eventually over the time I realized that this is anxiety and I have worked on it. Now when we come back on
my journey, like when I came back from UK. So Mm-hmm. as I mentioned that, of course, I had to come back in the middle of the course. So in March, I had a two-way ticket. So मैंने अपनी return ticket भी book करा रखी थी अप्रैल के लिए, because मुझे लगा था कि मैं वापस जाने वाली हूँ. But I did not go back, and that just got really difficult for me to cope with, because firstly, I had invested a lot of money in this course. Mm-hmm. So I had too many hopes with this course. It was not just कि ठीक है एक साल के लिए जाना है और वापस आना है. I wanted to stay there. I wanted to explore more. मुझे वहाँ internship भी करनी थी. But it just got really difficult for me to cope with, and the fact that I could not ever meet my international friends again, that just got really difficult for me. So at that time मेरी anxiety बहुत ज़्यादा peak पे चली गई थी. Like मुझे वापस नींद आना बंद हो गई थी, and I was up till 5 a.m. in the morning. I used to just keep watching shows on Netflix. मेरी पढ़ाई भी थोड़ी इफेक्ट होने लग गई थी. So that is when I started facing the physical symptoms of anxiety again. I think मुझे usually my symptoms are usually around कि मुझे सांस नहीं आती, या फिर मेरी muscles बहुत tense हो जाती है, like around the jaw areas. Mm-hmm. So these are the physical symptoms that I have faced. Mm-hmm. Okay. And I was listening to you, and I remembered one incident when I was working at a bank in Jaipur. I had this kind of situation with me, and where a senior was really angry without reason, and I couldn't take it. I, in fact, quit the next day. It was a safe sarkari naukri, but still, I quit the next day. I think जो ये जर्नी होती है, या फिर एटलीस्ट जो ये जिसको पैनिक अटैक कहते हैं, और Yeah. ये ना हम लोगों में से बहुत लोगों को पता नहीं होता. इनफैक्ट आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट. आई वाज 24 और 25 एट दैट टाइम व्हेन दैट हैपेंड. एंड मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि वो कुछ डिफरेंट था, बिकॉज ऐसा होता नहीं था मेरे साथ. ऐसा नहीं है कि मुझे उससे पहले कभी किसी ने डांटा नहीं था, कभी कुछ हुआ नहीं था, बट एट दैट मोमेंट इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट. तो आई थिंक हम लोग को ये जो एजुकेशन है, ये जो नॉलेज है, नहीं होता है. और जब हम लोग के सामने ऐसी सिचुएशन आती है, तो या तो हमें लगता है कि वी आर अबाउट टू डाई, या फिर वी आर वेरी सिक, या फिर समथिंग समथिंग इज रॉन्ग विद अस. मतलब इट इज लाइक हमारे साथ रॉन्ग है, लेकिन uh, हम में ही कुछ कमी है, समथिंग लाइक दैट. ऐसा नहीं होता ना कि हम लोग उसको जस्टिफाई कर पाए किसी तरीके से, या उसको कोई नाम दे पाए. I think this is something which you also said, ki 12 years of school education and there is nothing taught about mental health. Exactly. It should happen in some way. I don't know. When I talk to my husband, he is also like कि नहीं ये ऐसे ही होता है. Even he is 40 years old now, but उनको भी लगता है, मेरी मम्मी को भी ये लगता है कि कुछ नहीं होता. My sister, उसको भी लगता है कि कुछ नहीं होता है. तो बहुत सारे लोगों में अभी भी नहीं पता है उन्हें. When you experienced these symptoms, Kashish, Yeah. and you realized कि ये सब क्यों हो रहा था आपके साथ और क्या हो रहा था, you understood it, then what did you do? जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि एंजाइटी है, दिस वाज लाइक द सेकंड टाइम जब मुझे एंजाइटी अटैक आया था. मतलब मुझे पहले भी एंजाइटी अटैक्स बहुत आया, बट प्रॉपर व्हेन आई हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, दैट वाज इन 2018 आई थिंक. मैं तब कैट के लिए प्रिपेयर कर रही थी. आई वांटेड टू डू एमबीए फ्रॉम इंडिया, एंड मुझसे नहीं हो रहा था. आई वाज जस्ट फीलिंग वे टू प्रेशराइज्ड, एंड मुझसे वो पढ़ाई हैंडल नहीं हो रही थी. एंड देयर वाज जस्ट दिस वन डे, एंड मुझे वही सांस आना बंद हो गई थी, एंड आई वेंट टू माय पेरेंट्स. दे टुक मी टू द हॉस्पिटल, एंड द डॉक्टर टॉक टू मी कि व्हाट इज गोइंग ऑन, बिकॉज योर ब्रीदिंग इज जस्ट रैपिड, बट कुछ भी लंग्स में इशू नहीं है. सो टॉक टू मी, व्हाट इज गोइंग ऑन. सो आई टोल्ड हिम दैट दिस इज, मतलब मेरी लाइफ में अभी ये चल रहा है, and I'm preparing for CAT. And he asked me that, are you feeling pressured in some way? And I said, yeah, because obviously if I don't perform well, then I won't be able to go to a highly ranked college. And he just told me a very simple thing that, okay, if you cannot go to a highly ranked college, like तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी. Yeah. इवन लाइक मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं डॉक्टर नहीं बनता तो मेरी लाइफ खत्म नहीं हो जाती. और भी बहुत चीजें होती है लाइफ में. तो दिस इज जस्ट एंजाइटी एंड स्ट्रेस. इतना स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं है. कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड.
जस्ट काम डाउन, प्रिपेयर करो, नहीं होता तो नहीं होता. एंड इन अ वे लाइक इवन माय पेरेंट्स दे वर क्वाइट सपोर्टिव ऑन ऑल दिस. उन्होंने कभी ऐसे बचपन से हमें कभी प्रेशर नहीं किया है. लाइक दे आल्सो यूज्ड टू से कि ठीक है पढ़ाई करो, मेहनत करो, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो देख लेंगे, थोड़े मार्क्स कम आ जाएंगे. तो आई थिंक वो इंटरनल प्रेशर जो मुझ में था हमेशा से, लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू परफॉर्म वेल. मुझे लगता था कि मैं ये नहीं करूंगी तो मेरी लाइफ कहाँ जाएगी. तो उस कारण मुझे काफी एंजाइटी रही है. तो दैट वाज द मोमेंट जब मुझे रियलाइज हुआ था कि ओके दिस इज एंजाइटी. उसके बाद जब मैं यूके में थी तब मुझे इतने ऑफ्टन एंजाइटी अटैक्स नहीं आते थे. आई वाज हम्म प्रिटी मच ओके. इट वेंट ऑन पीक जब मैं यूके से वापस आई. एंड इवेंचुअली आई स्टार्टेड टेकिंग थेरेपी हम्म and I worked on it. Even before therapy, I was trying to work on it by myself. मैंने सुबह जल्दी उठना, लाइक वो जो होता है ना, ब्लॉग्स पढ़ते हो गूगल पे जाके कि हाउ टू या नॉट फील एंग्शियस. हम्म मैंने वो सब कुछ किया. आई स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली, लाइक आई स्टार्टेड वेकिंग अप एट 6:30 a.m. मैं मेडिटेशन करती थी, मैं होम वर्कआउट्स करती थी, मैं जर्नलिंग करती थी. आई हैड अ रूटीन. But still that was not enough. And हम्म that is what I like to tell people कि जब भी आप किसी को एडवाइस दे रहे होते हो कि ये करो, that might help someone, but वो एक अकेली चीज नहीं होती है हेल्प करने के लिए. इवेंचुअली प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज या ओनली अ प्रोफेशनल कैन टेल यू कि आपके हो क्या रहा है. एंड दे आर obviously educated enough, they have a degree, उनको पता है कि how to help you in the right way. Yeah, so you tried your ways, whatever you found online, and when it didn't help much, you went to a professional. तो प्रोफेशनल से मिलने के बाद डिड यू सी सम काइंड ऑफ चेंज, लाइक आपको कैसा लगा उनसे उनसे मतलब एक बार सर्विस लेने के बाद? So I was in therapy, like I am still in therapy. अभी मेरे therapy sessions बहुत कम हो गए हैं. But eventually, honestly, बहुत difficult था because I am an हम्म extreme introvert हम्म and I have never talked about to anyone about my issues. और 2-3 महीने लगे थे open up होने में, even to my therapist. But हम्म it worked out really well. I think जो मेरे issues identify हुए थे, it was majorly around work and some insecurities जो मेरे अंदर थी. So we worked on it and then she gave me some coping strategies. And मुझे याद है कि मैं उस टाइम पे मेरे पास जॉब नहीं थी, जस्ट राइट आफ्टर मास्टर्स, और कोविड भी चल रहा था तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था. हम्म तो मुझे उस कारण काफी एंजाइटी रहती थी कि मैंने यूके जाने के लिए इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं एंड आई डोंट नो इफ आई विल गेट दैट बैक. मुझे लो पेइंग जॉब पे सेटल नहीं होना. तो काफी एंजाइटी रहती थी. सो माय थेरेपिस्ट सजेस्टेड मी दिस जस्ट वन टिप कि जब भी तुम्हें एंजाइटी हो रही है, व्हेन यू आर ऑन लिंक्डइन, जब तुम जॉब अप्लाई कर रही हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि एंजाइटी होना शुरू हो रही है, तो जस्ट स्टॉप. उसी टाइम अपना लैपटॉप बंद करो और जस्ट वॉक आउट ऑफ योर रूम. जस्ट चेंज योर सराउंडिंग्स. हम्म 5 मिनट का ब्रीदर लो एंड देन स्टार्ट अगेन. इतना स्ट्रेस लेके काम करने का कोई मतलब नहीं है. सो दिस वाज वन थिंग जो मैं आज तक करती हूँ एंड इट रियली हेल्प्स. ओके, सो दिस इज आई थिंक समथिंग विच अ लॉट ऑफ अस डोंट अंडरस्टैंड, कि अगर किसी चीज से ज्यादा परेशानी हो रही है तो कई बार होता है कि थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, रादर देन ट्राइंग टू ब्रेव Exactly. थ्रू थ्रू एवरीथिंग. इट्स बेटर कि हाँ चलो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो एंड कम बैक टू इट लेटर. Good strategy, I would say. So, Kashish, you're like, did you get a job? First, tell us that. या सो मैंने उस टाइम पे, लाइक दिस इज 2019, तो Mm, उस टाइम पे मैंने 2 इंटर्नशिप्स की थी एज अ कंटेंट राइटर. फाइनली अप्रैल 2020 में आई गॉट अ जॉब. आई वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर एंड आई वाज डूइंग प्रीटी गुड. इट वाज लाइक मतलब काफी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी थी वहां पे, काफी मेरी ग्रोथ हुई है. बट आफ्टर 1 ईयर आई जस्ट रियलाइज कि आई वांट टू एक्सप्लोर फ्रीलांसिंग. बस देयर वर सम रीजंस कि मुझे लग रहा था कि आई वुड डू बेटर विथ फ्रीलांसिंग. लाइक आई वांटेड दैट फ्रीडम कि देयर विल बी डेज जब मुझे अगर नहीं काम करना हो, मुझे किसी और चीज में अपना टाइम लगाना है, तो आई हैव दैट स्पेस. सो mm, लास्ट ईयर अराउंड February March I quit my job and I started exploring freelancing. okay, okay. So I can totally relate. Sorry, I can totally relate with that part.
बिकॉज मेरे साथ भी यही था। मैंने सब जगह काम करके देख लिया, लेकिन मुझे हमेशा से ये समझ में आ रहा था कि मैं अकेले बेटर काम करती हूँ, अकेले, या फिर व्हेन आई हैव अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, आई हैव माय ओन शेड्यूल। तो या दैट्स completely understandable also. So you started exploring that freelancing thing, and you also started anxiously yours. उसके बारे में हमें बताइए, because starting something is not easy. So what inspired you to start? Like a lot of people want to do something, या फिर at least they need something. और एक और चीज होती है कि इंस्टाग्राम पे जब हम जाते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, हमें लगता है कि हम भी शुरू कर देते हैं, राइट? लेकिन उसको सस्टेन कर पाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट एंड व्हाट इंस्पायर्स यू टू कीप गोइंग। राइट। ओके, सो फर्स्टली इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, एंशियसली योर्स मैंने स्टार्ट किया था अक्टूबर 2020 अराउंड में। अगेन दिस वाज द टाइम जब मैं जॉब ढूंढ रही थी, और मेरे पास काफी फ्री टाइम था एंड मेरे को एंजाइटी भी काफी हो रही थी। सो आई जस्ट थॉट दैट दिस कुड बी अ नाइस वे टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ ऑल्सो। मुझे कंटेंट क्रिएट करना भी बहुत अच्छा लगता था, and I can talk about my journey. It can be empowering for other people also. So honestly, it started somehow, somewhat as a hobby. कि okay, I can just start creating content. I can put it up on my portfolio. And over the months, I realized कि इतने सारे लोग हैं जो सिमिलर इश्यूज से निकल रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू टॉक अबाउट इट बिकॉज मेरे बहुत सारे बैचमेट्स ने, मेरे एक्वेंटेंसेस ने, दे स्टार्टेड टेक्सटिंग मी कि यू आर डूइंग प्रिटी ग्रेट एंड हमें भी ऐसा फील हो रहा है बट हम बात नहीं कर पा रहे हैं। एंड इट्स गुड टू सी कि देयर इज समवन हु केयर्स अबाउट दीज इश्यूज एंड टॉपिक्स। बट आफ्टर दैट, when I started working full time, so anxiously also, like there was a time जब मैंने 6 महीने तक कोई content नहीं डाला था because I did not have that space and मुझे जॉब मिल चुकी थी, हम्म। तो मेरा सारा टाइम वहां पे जा रहा था। लास्ट ईयर व्हेन आई क्विट माय जॉब, तब वापस मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम आ गया था। तब आई थॉट दैट आई कैन थोड़ा सा इन्वेस्ट माय टाइम इन एंक्शसली योर्स अगेन। मैंने वापस कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया एंड तब से आई हैव बीन क्रिएटिंग कंटेंट एंड देन मैंने प्रोडक्ट्स कैटेगरी में भी एंटर कर लिया। हम्म। ओके, सो सी कई बार होता है ना, जैसे और इनफैक्ट लिटिल फिक्सेस में बहुत सारे एपिसोड्स में ऐसा हुआ है कि कोई कर कुछ और रहा होता है, बट लाइफ उनको घुमा के कहीं और ले आती है, एंड दे स्टार्टेड डूइंग समथिंग एंटायरली डिफरेंट, एंड देन इट बिकेम्स द करियर, लाइक द थिंग दैट दे एंजॉय डूइंग। तो आपने एंग्शियसली योर स्टार्ट किया, नाउ यू आर अ फ्रीलांसर एंड यू आर ऑल्सो डूइंग योर बिजनेस, जिसको साइड हसल बोला जाता है। कशिश के ऊपर एज सच कोई प्रेशर नहीं था पढ़ाई को लेके उनके पेरेंट्स की तरफ से, बट उसके बाद भी शी यूज टू एक्सपीरियंस एंग्जाइटी। तो आई डोंट नो, ये सब चीजें कहीं से भी आ सकती हैं, हम लोग सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हो सकती हैं, हम हो सकता है हमने किसी और को देखा हो बहुत ज्यादा अचीव करते और हमें लगता हो कि हम नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट नो, मतलब देयर कैन बी लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर, टू बी माइंडफुल कि जो भी चीजें हम फील कर रहे हैं वो क्या है और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो कशिश, आपको मैंने देखा है कि आप इवेंट्स में जाते रहते हो, एंड यू मस्ट हैव इंटरेक्टेड विद अ लॉट ऑफ पीपल ऑनलाइन एज वेल। ये सारे जो इंटरेक्शंस हैं, लोगों से मिलना है, हैज इट टॉट समथिंग अबाउट मेंटल हेल्थ? या डेफिनेटली, आई थिंक जो सबसे एक चीज मैंने सीखी है लोगों से और इंटरेक्ट करने में लास्ट 2-3 साल में कि लिटरली एवरी सिंगल पर्सन इज गोइंग थ्रू समथिंग दे डोंट टॉक अबाउट। या, सो और मे बी दे डोंट इवन नो अबाउट। एग्जैक्टली, हम उनसे मिल सकते हैं, दे कैन पुट ऑन अ हैप्पी फेस, दे कैन कम टू अस टॉक नॉर्मली, बट वी डोंट नो कि घर जाकर या जब वो अकेले में what kind of thoughts are bothering them, what kind of issues they are going through. So we really, as a society, as an individual, we really have to start being kind to people हम्म। because we don't know कि उनको क्या bother कर रहा है actual में. For example, अभी last year in December, I was exhibiting at an event and कुछ लोग आए थे मेरे स्टॉल पे एंड दे स्पोक अबाउट कि कैसे उनको भी बहुत एंजाइटी हो रही है एंड दे आर जस्ट गोइंग थ्रू अ रफ पैच, पर उनको पता ही नहीं कि ये हो क्या रहा है, उनको इस बारे में करना क्या चाहिए।
because they don't have the right kind of support, they don't have the right kind of awareness. ओवरऑल सपोर्ट बहुत कम है अभी भी. ऑल्दो आफ्टर द पैंडमिक मेंटल हेल्थ पे ओवरऑल काफी ज्यादा कॉन्वर्सेशंस होने लग गई है, बट आई बिलीव वी स्टिल हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो. अभी भी बहुत सारे मिथ्स हटाने बाकी हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं जो बाहर निकल कर नहीं आ रहे हैं. या और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली. उन्हें हो क्या रहा है, या फिर कुछ है भी. लाइक दे थिंक कि हाँ ये सब नॉर्मल है. लाइक व्हेन आई यूज्ड टू टॉक टू माय थेरेपिस्ट, यूज्ड टू टॉक अबाउट माय इश्यूज एंड आई वाज लाइक ऐसे ही होता है. तो शी इज लाइक नहीं, ऐसे नहीं होता है. या ट्रू. सो हम लोगों ने मेंटल हेल्थ की बात करी, और अब थोड़ी सी बिजनेस की बात भी करते हैं. आप एंशियसली, और उस पे इनिशियली हमने बताया भी कि यू हैव सम प्रोडक्ट्स लाइक गाइडेड जर्नल्स एंड सेंटेड कैंडल्स. तो डिड यू ऑलवेज वांट टू क्रिएट प्रोडक्ट्स जब आपने अपनी जर्नी शुरू की थी इंस्टाग्राम पे, या लाइक इट वाज अ ग्रेजुअल थिंग? वी वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड स्टार्टिंग दिस. सो जब मैंने इंस्टाग्राम पे अपना पेज चालू किया था, तब आई हैड नो प्लान्स ऑफ स्टार्टिंग माय ओन बिजनेस. एज आई मेंट कि वो बस एक हॉबी थी. उसके बाद जब मैंने अपना जॉब क्विट किया, उसके बाद आई हैड सम स्पेयर टाइम इन हैंड, तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ इस पेज के साथ. और एंड I came across these affirmation cards kind of thing on Instagram, and I was just researching more on this product. So I thought of coming up with a product of my own, and my first product was self healing cards. वो मैंने खुद पूरा क्यूरेट किया था. द आइडिया बिहाइंड वाज लाइक, बॉक्स में देयर आर 30 जर्नलिंग प्रॉम्प्ट कार्ड्स, एंड पूरा आइडिया ये था कि लोगों को और इनकरेज करना है जर्नलिंग करने के लिए. बिकॉज पर्सनली मुझे जर्नलिंग ने काफी हेल्प किया था जब मैं बहुत एंजाइटी से निकल रही थी. इवन टुडे मैं बहुत जर्नल करती हूँ, क्योंकि उससे आई जस्ट फील वेरी लाइटर आफ्टर दैट. तो ऑब्जेक्टिव पूरा वो था. इनिशियली आई लॉन्च्ड ओनली 30 बॉक्सेस, क्योंकि मुझे थोड़ा ट्रायल रन करके देखना था. द रिस्पॉन्स वॉज प्रिटी गुड. आई एम ऑलमोस्ट डन विद 25 बॉक्सेस टिल नाउ. सो रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा है. उसके बाद आई रिमेम्बर इवन व्हेन आई वाज वर्किंग फुल टाइम, आई हैड दिस वेरी बिजार थॉट कि मुझे कभी थॉटफुल जर्नल्स बनानी है. आई डिड नॉट नो हाउ वुड आई एग्जीक्यूट दैट, बट वो हमेशा से बैक ऑफ द माइंड पे एक थॉट रहता था. सो अभी जब बॉक्सेस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया, उसके बाद अराउंड अक्टूबर नवंबर में आई फाइनली थॉट कि आई जस्ट गिव इट अ शॉट. मैंने अपनी 2 गाइडेड जर्नल्स लॉन्च की. वन इज कॉल्ड पॉज एंड रिफ्लेक्ट जर्नल, वन इज ओपन वेन जर्नल. दोनों के कॉन्सेप्ट काफी अलग है, बट इट्स समथिंग जो मैंने थेरेपी में सीखा था. स्पेशली द पॉज एंड रिफ्लेक्ट जर्नल, लाइक माई थेरेपिस्ट ऑलवेज सजेस्टेड मी कि जब भी तुम्हें एंग्जाइटी हो रही हो, उस मोमेंट पे बस रुक जाओ, जस्ट पॉज फॉर अ मोमेंट, पॉज एवरीथिंग. तो पूरा आइडिया वहां से जनरेट हुआ है कि you pause and write about whatever is bothering you, and reflect on how you can make yourself feel better. ओपन वेन जर्नल का आइडिया इज अ बिट डिफरेंट. उसमें देर आर 60 जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स. कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जर्नलिंग करना स्टार्ट करना है, बट हमें समझ नहीं आता हम जर्नल किस बारे में करें. या और फिर बहुत लोग प्लानर्स खरीद लेते हैं, एंड दीज फैंसी प्लानर्स मैं भी खरीदती हूँ. एंड देन आफ्टर अ मंथ और टू वी जस्ट कैन नॉट कंटिन्यू, क्योंकि या इट जस्ट गेट्स टू मच. तो पूरा थॉट प्रोसेस जर्नल्स के पीछे ये था कि जर्नलिंग करना इजी होना चाहिए, एंड खुद की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना शुड बी सिंपल एंड फन. Of course, nowhere I have mentioned कि these are in anywhere replacement for taking professional help. Obviously, anyone should go and do that. But these things can also help कि अगर आपको कभी लगता है कि आप खुद से कुछ करना चाहते हैं, you want to invest in your mental health, तो these are a good start. Yes. And I really like how you honestly mentioned कि you had 30 boxes and you are till now done with 25 boxes. और जब लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं तो उनको लगता है अरे इसने बिजनेस स्टार्ट किया है, 1,000 2,000 तो इसके चले ही गए होंगे प्रोडक्ट्स, मतलब इतना तो करा ही होगा. राइट. तो थैंक यू फॉर
पुटिंग इट आउट देयर, सेइंग इट आउट लाउड कि भाई छोटा बिजनेस है, हम जब स्टार्ट करते हैं तो Right. कैसे होता है. इट्स नॉट लाइक कि आते ही आते हमने हजारों प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दिए या बस. बनाना ही शुरू कर दिए, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट. Right. सो नाउ यू ऑल्सो सेड कि द रिस्पॉन्स हैज बीन गुड. So, how do you market your products? I have seen your Instagram page, and what else do you do? So currently, firstly, I started by exhibiting at this event called Shift. It's Yeah. an art and design festival by the Awaz Studio. In October, first time I exhibited, उसके बाद दिसंबर में भी किया था. वो वाला ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके कारण मुझे काफी एक्सपोजर मिला है. जयपुर में बहुत सारे लोगों को मेरे ब्रांड के बारे में पता चला है. दैट वाज अ प्रिटी गुड स्टार्ट. उसके बाद अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंस्टाग्राम पे लाइक you cannot rely on Instagram completely to Mm-hmm. sell your products because काफी low response rate होती है and you cannot just keep investing in Instagram ads. It's just a bit Yeah. too much क्योंकि उसके बाद fake followers के chances होते हैं, spams के Mm-hmm. बहुत chances होते हैं. Currently, I am just trying to go in more the offline space. For example, I'm just looking for more events जहाँ पे मैं exhibit कर सकूँ. And then जयपुर में जो cafe spaces हैं, वहाँ Mm-hmm. पे मैं, for example, the art घर जयपुर में एक जगह है, वहाँ Mm-hmm. पे मैंने स्टूडियो में अपने प्रोडक्ट्स रखवाए हैं. वैसे ही दो तीन कैफेज से अभी आई एम इन कॉन्वर्जेशन विद, तो वहाँ पे भी वो सारा चल रहा है. तो दैट इज अनदर थिंग. I think next step would be to put it on Amazon. Mm-hmm. Amazon listings पे डालने का प्लान है इनिशियली. तो वो वाला भी सब कुछ प्रोसेस में है. तो बेसिकली अभी सब कुछ काफी प्रोसेस Naya वाले hai, स्टेज पे and चल रहा है. yes, Exactly. obviously. Okay, okay. So good to hear this. And also, you keep mentioning Jaipur. मुझे इतनी याद आने लगती है जयपुर की. Like every time you say Jaipur, I'm like, oh no, she's sitting in Jaipur. Because I just moved to Bangalore, and so far I'm not enjoying it. Like it's a nice place, but I love Jaipur a lot. Yeah. Every time she says वो आर्ट घर है, वो कैफे है, I'm like कौन सा कैफे है? So, okay, we talked about how you started your brand. We talked about how you market your brand and how you are planning to scale. And with your brand, you are also empowering people to come out and speak about mental health, like whatever they are going through, or if not speak, at least understand what they are going through and work on it by themselves, maybe to start with. So, do you have any advice on how to help a friend or anyone you are close to, like if they are going through something hard? For starters, being a good listener. जब आप मैंने ये चीज रियलाइज की है कि जब आप रिसीविंग एंड पर होते हो तो थिंग्स कैन गेट इक्वली डिफिकल्ट. बिकॉज if someone really close to you is going through anxiety or depression or any other mental health condition, तो आप भी इक्वली लॉस्ट फील करते हो कि आई डोंट नो दिस पर्सन, आई केयर अबाउट देम, आई रियली लव देम, बट मुझे नहीं पता कि मैं हेल्प कैसे करूं. Mm-hmm. सबसे पहले बीइंग अ गुड लिसनर इज रियली इम्पोर्टेंट. बिकॉज इट इज इजी टू गिव एडवाइस कि अरे ये कर लो ठीक हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट मेडिटेशन, सब ठीक हो जाएगा. Mm-hmm. बट being a good listener is important because, I mean, don't interrupt them. Don't just listen half the story and give them solution. Instead, let the other person confide in us, because it's very important कि उनको उस मोमेंट पे ये नहीं लगना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम्स छोटी हैं. Mm-hmm. मेक देम फील लाइक दे मैटर. Yeah, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वट एवर दे आर गोइंग थ्रू, अगर आपको समझ नहीं भी आ रही है बट स्टिल डज नॉट मीन कि वो वैलिड नहीं है. exactly. Yeah. So, firstly, being a good listener is very important. Next thing is, अगर आपको लग रहा है कि आप एक अच्छे दोस्त बन पा रहे हो बट इवन दैट इज नॉट हेल्पिंग द अदर पर्सन, द नेक्स्ट बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि उनको प्रोफेशनल हेल्प की तरफ इनकरेज करो. Mm-hmm. Obviously, don't push them. At the end, ये उनका डिसीजन होगा if they are comfortable in that space, but you can send them some resources. You can share some material with them कि कैसे लोग ये कर रहे हैं, उनको हेल्प हो रही है, and if they want you will support them. You can
maybe guide them to a good therapist. Mm-hmm. But it's very important कि आप उनको इस way में help करो. Yes, so don't judge कि Exactly. वो क्या कर रहे हैं और आई थिंक नॉट एवरीवन इज एज यू आल्सो मेंशन कि डोंट पुश देम फॉर प्रोफेशनल हेल्प Hmm. क्योंकि बहुत सारे लोग ओपन भी नहीं होते मे बी दे विल अंडरस्टैंड इट ग्रेजुअली बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एज कशिश सेड इज टू बी अ वेरी गुड लिसनर and one thing I would like to add here, it is very difficult to be a good listener, especially because हमारे अराउंड गुड लिसनर्स नहीं है और दूसरी चीज जब कोई हमसे ऐसी बातें करता है तो वी फील वेरी अनकंफर्टेबल Yeah. है ना तो आई थिंक वो भी एक चीज है जिससे बाहर आके या एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए उसको नीचे करके वी हैव टू बी देयर फॉर द अदर पर्सन ऑल्सो. Okay. So, Kashish, we talked about your journey with your anxiety and everything. Then we talked about your business. Hmm. So, you have done so much in a very short time. So, before we let you go, I'd like to know, okay, is there a place we can send them so that they can know more about you, where they can connect with you online? Of course. So I'm available on Instagram, and my Instagram handle is anxiously yours underscore. So Mm-hmm. anyone, if they want to reach out to me, if they want some resources for themselves, I can help them out. Anything that they want. And yeah, you guys can drop me a DM. Okay, okay. So I will link Kashish ka Instagram page in our show notes also. So you can check that out. And Kashish, I'm grateful to you for being here today and for sharing your thoughts, your journey, and even about your business so openly. So thank you for being here. Thank you so much, Maitri, for giving me this opportunity where I could speak about myself. तो बहुत सारे लोगों को बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है बट हाउ मेनी ऑफ देम क्रिएट इट. Kashish की story is a classic example of creating what you need and creating it with a lot of thoughtfulness. I wish her all the best. इस एपिसोड में मेंटल हेल्थ भी थी और बिजनेस भी था. What was your takeaway? Share with me on Instagram at littlefixespodcast or send an email to littlefixespodcast@gmail.com. Your ratings, reviews, subscriptions and shares help these messages in reaching more people, so please keep them coming. अब मिलते हैं 5th अप्रैल को. तब तक के लिए खुद से प्यार करते रहो और सदा सैसी रहो. बाय.